from 23rd November, but that is for third year and final year students. So second year students are getting more time. In between, you are having your practical exam online. Okay, practical submissions, quiz and viva. I already announced in a last class. This is regarding the internal practical evaluation. Regarding the external practical evaluations, a panel of faculty members, they are going to take a viva, and that is about your external practical exam evaluations. Okay. In all these cases, at least you have to cover a 50% weightage. Okay. Otherwise, you are failed in internal practical, internal mid-sem, as well as external practical exam. Okay. Those who are having a low marks, less than 12 in the mid semester 1, they have to work hard in second mid sem. Okay. Sir, your voice is not clearly audible. Hello. Hello. Now is it fine? Hello, sir. Hello. Yes, sir. Yes. So Yes, sir, it is fine. those students are having a marks less than 12 in the first mid-sem exam. Okay. So they have to work hard. This time is also your exam is of having a multiple choice, fill in the blank, and uploading kind of questions. You have to do enough practice while uploading kind of questions. See, if I am finding out whatever the file that you are uploading, and if I find out the same file or same content by any of your classmates, then straight away the marks for that question is 0, whether your answer is correct or wrong. Okay. So please take care. Do not do any kind of cheating while examination. Okay. And this time your exam, that is mid-semester exam, quite tougher than the semester 1, mid-sem 1 exam. So I hope everyone you are preparing well for the same. Okay. Start preparing from today to still you have a 15 days to go. Okay. And in your lab, faculty members are already covering root locus as well as Bode plot, or maybe they are going to cover in this week and in the next week. Okay. So in class, just we are solving the examples and then we are completing the course. So today we are going to take about an RH criteria. Last class, we ended with examples. Examples is related with root locus stability criteria, where the roots, that is both rows are equal, and then we have to assume one another row. Okay. I hope we take this example last time. Hello, Rishi. Which one is your our examples last time? Ye- Sir, that the reverse we in that we take reverse coefficients. Yeah, reverse coefficient, and then after we start these examples. If you remember, okay. If you remember, we ended with the examples over here. That is, my transfer function is given as 10 divided by s square s raised to 5 plus 7 s raised to 4 plus 6 x cube plus 42 s square plus 8s plus 56. Okay. I hope. Now everyone write down in parallel. Make a route table from this. Take denominator, that is our characteristic equation, 1 plus g of s h of s equal to 0. And start making the route table. Your route table is like this. My first element is 168. How it become 168? Because s to the power multiplication coefficient is 1, s cube is 6, and s is 8. Okay. Fine.
So 168. Your Ah, voice is breakdown. I don't know why there is a breaking down of an voice. I think now is Sir, it fine? Sir, Yes. sir, here from my end it is clearly visible, clearly audible, sir. Okay, then maybe the problem on Rishi's side. Yes, sir. Okay, fine. So now for the second row, 7, 42 and 56. Okay. So this is my second row, 7, 42, 56. Okay. So if I common out the 7, then 168. Everyone completed this part? Yes, sir. Yes. Okay. Now, if we can see, now if I'm interested in finding out the third row, then the element is 0 because 1 minus 6, 1 into 6 minus 1 into 6 divided by 1. Then 1 into 8 minus 1 into 8 divided by 1. Like that way. So my third row becomes 0. Okay. So now when this is happened, when my two rows of Ruth table are equal, okay, a successive two row are equal. Successive means s to the power 5, s to the power 4. Maybe s to the power 4, s cube. Okay. So both continuous row, okay, that is successive row are having an equal element, then the next row becomes 0. Okay. So in that case, we cannot assume epsilon for each. Okay. Even epsilon for first column of Ruth array. Last class we did this part. Okay. So now what we have to do that here this row becomes 0. Fine. So now I am considering a one new equation that I can write down as P of S or A of S. Normally we write down as A of S, capital A of S, because it's of an auxiliary equation. Or we can say this is a one of the polynomial, so we can write down P of S. Okay. So P of S that is equal to, what is the previous row? Previous row is a 1, 6, 8. So 1 means s to the power 4, 1 s to the power 4, 6 s square and 8 s to the power 0. I hope everyone understood this equation. Yes, sir. Anyone having a doubt? No. Okay. So we are making an auxiliary equation such that whichever row is 0, take a just previous row and then form the auxiliary equation. Now, take a first derivative of it with respect to s. That is nothing but dp of s by ds. That is equal to 4s cube plus 12s plus 8 s to the power 0. So of course, there is a derivative become 0. Okay. So my answer is 4s cube 12s square. Sorry, 12s. So now the coefficient is 4 and 12. So that coefficient I am substituting here. Why? Because it's a s cube. So s cube का coefficient क्या है? 4. उसके बाद में s का आएगा, that is 12. Of course, this one is 0. Now, in these 4 and 12, so what is common? Common is 4. So 4 की जगह 4 common निकाल लिया तो 1 लिख सकते हैं and 12. 12 4s are, sorry, 4 3s are 12. So 3. So मेरा आंसर आएगा 130. Okay. Based on this, calculate the next row. The answer is 3. Why? 1 into 6 minus 1 into 3 divided by 1. Next, 1 into 8 minus 1 into 0 divided by 1. So 8. And so on we calculated. Okay. So
by this way we complete the route table. Now, what happen is, in this we can see the first column of root array. पहला column देखेंगे. अगर मैंने first column of root array देखा, so there is a none of the element having a negative sign, or there is a no sign change in the first column of root array. तो आंसर क्या आएगा? None of the pole on right hand side of S plane. Hence, my system is stable system. ठीक है? Understood? Yes, sir. Yes, sir. बाकी कोई आंसर नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों. Yes, sir. 57. Yes, sir. Is this clear? Yes, sir. Okay. So moving further. अब इससे तो पता चला कि भाई मेरा सिस्टम है वो है अनस्टेबल है. बट अगर ये इक्वेशन मैं देखूं, ये जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बना, सो दिस इज नथिंग बट माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे? तो आई एम एज्यूमिंग एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स. तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8. ओके, I hope everyone understood. Okay, so now I am making this equation equal to 0 and then finding out the roots. तो roots क्या आएंगे? x square plus 6x plus 8 equal to 0. तो x equal to minus b plus or minus under root delta divided by 2a. Okay. तो जो रूट्स आएंगे वो मेरे एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे. एंड दीज कॉम्प्लेक्स रूट्स आर दिस, बिकॉज दिस इज द पोलिनोमियल विथ अ फोर्थ ऑर्डर टर्म. 4 है. ओके, तो 4 डिफरेंट रूट्स आएंगे. तो ये 4 डिफरेंट रूट ऐसे आएंगे. सो लुकिंग टुवर्ड्स द रूट्स ऑफ दिस, के वी कैन से दैट माय सिस्टम इज के अनस्टेबल सिस्टम. ठीक है ना? बिकॉज हम अभी तो हमको राउट टेबल से पता था कि भाई मेरा सिस्टम स्टेबल है, मगर जब मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व किया, एट दैट टाइम आई केम टू नो दैट माय 2 poles on left hand side, 2 poles are on right hand side, and these 2 poles that is on my imaginary axis. Okay, so that we can find out by calculating or analyzing the auxiliary equation or polynomial. Okay, so ये हमारा स्पेशल केस हुआ. A special case means when my 2 rows are equal, then successive row is equal to 0, and in that case if I am finding out the roots of polynomial, wherever it is lie, based on that we can predict about stability. ठीक है? तो RH क्राइटेरिया का ये एक मेरा नेसेसरी कंडीशन हुआ. सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि भाई none of the element having a sign change in the first column of root array. Okay, now moving further, let pole distribution via the route table with a rows of zeros. चलो ये एक इक्वेशन है, आप लिखो सब लोग. ट्रांसफर फंक्शन. I hope this screen is visible and you are writing down this equation. Transfer function equal to 20 divided by s to the power 8 plus s to the power 7, 12 s6, 22 s5, 39 s4, 59 s cube, 48 s square, 38 s plus 20. Now from this, first of all form the root table. आप सब लोग root table बनाओ. Hello. Yes, sir, Mickey. Yes.
those who are writing down if possible on your camera so I can came to know that क्या आप लिख रहे हो, मुझे पता चले. कैमरा बंद करके बैठोगे पता नहीं चलेगा. When it is completed, just raise the hand. Otherwise, tell me, okay, sir, I make the route table. If one of the row is 0, find out an auxiliary equation and solve the auxiliary equation. You are getting final answer like this way. I want these kind of answers. Is it completed? Two rows completed, sir. Third row is done. Yes, Rishi's camera is on and Vraj, दोनों लोग का ऑन है, बाकी तो पता नहीं सब लोग क्या करते हैं. व्रज आज नया टी शर्ट पहना हुआ है. माइक ऑफ है. यस सर. सर रेगुलर आज बर्थडे. नहीं नहीं कुछ नहीं है. तो आपका 2 डिवाइस ऑन है. हाँ सर. हाँ, इसलिए इको आ रहा है. यस कैमरा के लिए फोन चालू रखा है. फोन में है ना, आप माइक ऑफ कर दो, स्पीकर ऑफ कर दो तो इको नहीं आएगा. यस सर. यस. यस 46. हाउ अबाउट यू? Sir, fine. फाइन. Yes. कभी इंटरेक्ट नहीं करते हो, बोलते भी नहीं हो. Yes. आप लोग इंडिविजुअल तो कॉलेज में मिलने आ सकते हो, नहीं आ सकते? सर बार सूरत रहता हूँ ना मैं. आप सूरत रहते हो यार? सूरत कहाँ, Yes. लोग है ना अभी तो जम्मू कश्मीर से मुझे मिलने आते. नहीं आना चाहिए, क्या लगता है आपको? आना चाहिए सर. आना चाहिए? नहीं 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 आना चाहिए. क्यों? अभी यार सूरत में भी बहुत ज्यादा केसेस है. ठीक है, वी हैव टू Yes, टेक केयर. और अभी घर पे बैठे जितनी भी पढ़ाई हो सके इतना अच्छा है. देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूट लोकस. ठीक है, Yes, और sir. मैं थोड़ा बहुत क्विक जाऊंगा. अब क्विक मीन्स फास्ट. ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव टू कैच द स्पीड, अदरवाइज हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा. चलो हो गया आप सबका? 46 समझ में आया कुछ?
RH pattern. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good. Good. बाकी लोग पता नहीं कैमरा क्यों ऑन नहीं कर रहे हो. अरे भाई मैं आपके घर नहीं आऊंगा, आप लोग कैमरा ऑन करो. અત્યારે બપોર તો અમુક હશે ક્લાસમાં આપણે કે નાસ્તો કરતા હશે, કોફી, ચા, શરબત, ઉકાળો જે તમે પીતા હોય. બોર્નવિટા મળતું હશે નહીં? રોજ મળે કે ના મળે બોર્નવિટા? Hello, sir. સારું નહીં પીતો બોર્નવિટા. તો શું પીવો છો? કોફી અથવા તો ચા. કોફી અથવા ચા તો મળે બપોરે? હા મળે સારું કહેવાય ને. સર, ટાઈમ થાય તો મળે જ ને. હા એટલે સારું ના કહેવાય. સી ધીસ ઇઝ ધ ગુડ વે of learning, huh? And might be you surprise all of you, maybe second semester of this year is also online. Possibilities are there, huh? કે કોરોના જતો નહીં રહે અને તમે કોલેજમાં આવી નહીં જાઓ. આ રીતે જ ભણવું પડશે અને આ રીતે ભણીને એક્સપર્ટ થવું પડશે. બરાબર? આપણને સોફ્ટવેર આવડવું જોઈએ, હાર્ડવેર આવડવું જોઈએ, પ્રોજેક્ટ કરવાના, હવે બધું ઓનલાઈન કરવાનું જેટલું બને એટલું. ઓકે, કમ્પ્લીટ? હેલો. Yes, sir. Yes, sir. Yes, completed. So are you getting a same table? Hello. My screen is visible. યસ સર. Yes, okay sir. then. Yes, sir. Good. Okay. So here one time sign change, sorry, 2 times sign change. So that indicate my system is unstable, first of all. Okay. Even when I am solving the auxiliary equation, it shows that my roots are complex. तो एक्चुअली क्या हुआ देखो, राइट हैंड साइड पे 2 पोल है. ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 पोल है और जे ओमेगा एक्सिस आपकी जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके ऊपर 4 पोल है. टोटल 8 पोल्स है बिकॉज s to the power 8 that is my polynomial. ठीक है. So 2 poles are on right side, so that shows. वो कैसे पता चला? Because there is a sign change in the first column of root array 2 times. Okay. So मेरा system unstable और 4 poles are on imaginary axis, j omega axis पे है. So based on that I can say my system is marginal stable system. Okay. So actually overall result is my system is unstable. ठीक है. आपने एक एग्जांपल देखा होगा, आई थिंक, इन्वर्टेड पेंडुलम देखा है? एग्जांपल नहीं देखा है? पेंडुलम पता है ना आपको? पेंडुलम में Yes, sir. माइट भी आपके घर में घड़ी होगी जिसमें वो पेंडुलम ऐसा जाता हुआ है. ठीक है. गुजराती में लोलक कहेवाय, लोलकवाड़ी घड़ियाळ. Okay. So that same pendular, if I am considering just reverse means मेरा पेंडुलम ऐसा है और वो ऐसे ऐसे घूमेगा ऊपर और ये मेरा बेस है, नीचे बेस है. ठीक है. मान लो कि ये मेरा बेस है और यहाँ पे मेरा पेंडुलम है. ओके. और ये पेंडुलम अगर मैं बेस को थोड़ा भी हिलाता हूं ना ऐसे, तो पेंडुलम कैसा होगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे. ठीक है. So actually this is the highly nonlinear system. Okay. Or this example is very much correlated, same as suppose if you are riding in bus. अगर તમે બસમાં જતા હો, okay, and you are carrying a handle, આમ handle પકડીને ઊભા રહો બસમાં. Okay. So now if bus is in running at a certain speed
and if it is stop, then what happen? If it is stop, then what happen? तो धक्का जैसे लगेगा, मीन्स पेंडुलम Yes. जैसे हम लोग आगे थे. या हमको एक धक्का लगेगा. ओके, वो धक्का कैसे लगेगा? थोड़ा हम आगे जाएंगे और बाद में तुरंत पीछे आ जाएंगे, बिकॉज अवर बॉडी इज एक्टिंग. ठीक है, एक्चुअली वी आर मूविंग सपोज इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब बस ने ब्रेक लगा दिया. ओके, तो मेरा बॉडी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा था, बट यहां स्टॉप हो गया. तो क्या हुआ? धक्का लगा, पीछे आ गए. उसके बाद में हमने खुद ने फोर्स किया एंड देन वी हैव एन पोजीशन. सेम वे, सपोज बस स्टॉप पे बस खड़ी हुई है, आपने बस ले ली और आप बस में जगह नहीं है तो हैंडल पकड़ के खड़े हो गए. नाउ सडनली बस स्टार्ट्स, इवन दो एट दैट टाइम एक जर्क लगेगा आपको, वो जर्क आगे की ओर लगेगा. ठीक है, so both these things that is very much correlated with a non-linear system. Okay, and that is nothing but we can say that this system is a marginal or unstable system. अगर ज्यादा फोर्स आ गया ना तो हम गिर जाएंगे, बस में ही गिर जाएंगे, नीचे नहीं, बस से नीचे नहीं है, बस में ही गिर जाएंगे. सो दैट इज द अनस्टेबिलिटी. और अगर हम खुद संभल जाते हैं, दैट इज नथिंग बट मार्जिनल स्टेबल सिस्टम. ओके, सो इन सच टाइप ऑफ केसेस, तो ये एक यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो वर्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ एक दिखाया हुआ है. आप लोग ये एक एग्जांपल आप लैब व्यू में कर सकते हो. ठीक है, ऑफ इन्वर्टेड पेंडुलम. उसका क्या है नाम? इन्वर्टेड पेंडुलम. पेंडुलम है मगर दैट इज इन्वर्टेड. Okay, so that is my inverted pendulum. Okay, moving further, we are considering the next example. This example is a self study, so I hope you can do it by your own. Okay, we moving to the next additional example of RH criteria. ये एक मेरा open loop transfer function दिया हुआ है with the h of s. Feedback path is a 1. So what I am doing, first step, first of all, I am finding out the closed loop transfer function C of s by R of s. That is nothing but 200 divided by s to the power 4 plus 6s cube plus even 11s square plus 6s plus 200. Okay, I am taking a denominator. With denominator, I am forming the root table. From the root table, I am looking the first column of root array. If there is a number of time sign change, then based on that, I can find out or I can write about instability. तो यहाँ पे मेरा 2 बार साइन चेंज हो रहा है. कैसे? तो यहाँ में ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ये मेरा माइनस हो गया, एंड वंस अगेन इट इज प्लस पॉजिटिव. सो प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, सो 2 टाइम्स साइन चेंज. सो 2 poles that is on right hand side of S plane, hence my system is unstable system. Okay, एक दूसरा एग्जांपल है, that is open loop transfer function is given. We find out the closed loop transfer function. यहाँ मेरा first row 0 आएगा. तो first row 0 means sorry, आपका रो का first element 0. So I am assuming this is equal to epsilon. और हम ये एग्जांपल हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एप्सिलॉन लेके, अदरवाइज रिवर्स ऑर्डर पोलिनोमियल लेके. ओके, एंड द थर्ड एग्जांपल इज विथ ऑल द रोज आर 0. अभी हमने देखा ऑक्सिलरी बना. ठीक है, so like this way we have a different kind of examples. ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसन इज एन अंडर वाटर रिमोट कंट्रोल व्हीकल. ये पूरा अंडर वाटर रिमोट कंट्रोल व्हीकल का एग्जांपल दिया हुआ है. ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर. आई होप up to this part everything is understood. Yes, sir. Any Yes, doubt? sir. No, sir. Viraj? नो सर. Okay. नो सर. Fine. सर वो 57. व्हीकल दिखाया ना आपने, हाँ, वो टाइटैनिक पिक्चर में आता है. वो लोग वो स्टीमर गिर जाती है ना अंदर पानी में, मतलब तो उसे ढूंढते हैं सब पुराना yes, सामान. yes, yes, टाइटैनिक में था. या ओके, ओके, सो मूविंग फर्दर. नाउ
here is a some unknown value gain k. चलो अब आप सब लोग लिखो, दिस इज माई g of s, k डिवाइड बाय s इंटू ब्रैकेट s प्लस 7 s प्लस 11 and h of s equal to 1. Okay. So first of all, find out the transfer function c of s by r of s. आपका ये आना चाहिए k डिवाइड बाय s क्यूब प्लस 18 s स्क्वायर प्लस 17 7 s प्लस k. आ गया? Yes, sir. Yes. Now from the denominator, that is a characteristic equation, आप लोग अब राउट टेबल बनाओ. किसी ने RH क्राइटेरिया मैटलैब में ट्राई किया? नहीं किया होगा. किसी ने RH क्राइटेरिया पाइथन में ट्राई किया विथ पाइथन प्रोग्रामिंग? So I will try today. Okay, you try it today and then share in next class. Okay. Yes, sir. सर हाँ बोलो. सर वो मैटलैब में मैंने ढूंढा लेकिन सर वो नहीं मिला मेरे को. क्या नहीं मिला? ये RH डिपेंडेंट वोल्टेज क्राइटेरिया. सोर्स के RH नहीं क्राइटेरिया. नहीं नहीं RH क्राइटेरिया की बात कर. RH क्राइटेरिया डायरेक्टली नहीं મળે. डायरेक्टली कोई हाँ सर કમાન્ડ ये નથી. પ્રોગ્રામર. हाँ સર પ્રોગ્રામ हाँ. ની જ વાત કરું. બરાબર ને, પ્રોગ્રામ એ નહીં મળે. પ્રોગ્રામ આપણી જાતે બનાવવો પડે. ઓકે. ઓકે. પ્રોગ્રામ કઈ રીતે બનાવવાનો? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ડાઉન ધી or take a input polynomial. Okay. From the polynomial you have to form the root table. So how we can form the root table? Take a first maximum power of your s polynomial and keep one term, and then this is my first row, then second row, then form the third row by equation. Okay. So that we have to go step by step. ऐसे नहीं मिल जाएगा आपको. ठीक है. Done. Done, sir. Yes. आपका ऐसा आ गया राउट टेबल. Yes, sir. Same. ओके. तो अब अगर मेरा सिस्टम स्टेबल है, ऐसा आपको बोल दिया है, सो ऑफ कोर्स दिस k शुड बी ग्रेटर देन 0. Yes, sir. ठीक है. और इसका जो वैल्यू है 1386 माइनस k डिवाइड बाय 18, दैट शुड बी आल्सो ग्रेटर देन 0. Yes, sir. ओके. अगर मैंने ऐसा ले लिया 1386 minus k divided by 18 equal to 0. So can I find out the value of k? Yes, sir, bro. चलो तो K find की out value- the value of k. Okay, sir. Can you repeat? सर k की वैल्यू माइनस में आ जाएगी. k की वैल्यू माइनस में आ जाएगी. -1386. कैसे माइनस में आएगी भाई? सर माइनस 138 में नहीं आएगी. हाँ, 1386 1386 minus k equal to 0. So k equal to 1386. Yes, 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 sorry. 1386. યાર આપણે જોઈને જ કહી દે, કોઈ કેલ્ક્યુલેશન ના કરવું પડે. એને જ કહેવાય સ્માર્ટ વર્ક કરવાનું. હાર્ડ વર્ક નહીં, સ્માર્ટ વર્ક. બરાબર ને? અત્યારે છે ને જમાનો સ્માર્ટ વર્ક નો છે. જો સ્માર્ટ સિટીઝ, સ્માર્ટ ટીવીઝ, સ્માર્ટફોન, કે સ્માર્ટ EC એન્જિનિયર.
Okay, so K value is 1386. So if my K is less than 1386 है, then and then और greater than 0 है, तो मेरा फर्स्ट कॉलम ऑफ रूट टेबल पॉजिटिव आएगा and my system is stable. Okay? I hope everyone agree. Yes, sir. Yes. Okay. If I am taking a value of K greater than 1386, तो क्या होगा? ये जो टर्म है वो नेगेटिव. So there is a 2 times sign change, plus minus plus. Okay? So system is unstable आ जाएगा. Okay? Hmm. And if I am taking K equal to 1386, तो ये रो मेरा 0 हो गया. So I am taking this row, that is as an auxiliary equation. Auxiliary equation लिया तो मेरे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. 36 as and 0, तो मेरा 36 and this आंसर आ जाएगा. ओके, तो उस केस में if I am common out 18, तो क्या आएगा? s square plus 36 equal to 0. So s square equal to minus 36. So s equal to plus or minus under root 36. ठीक है? So in that case, roots are complex and system become marginal stable system. ठीक है? Hello? Yes, sir. Yes. In this book, the same example is solved in Appendix B using a MATLAB program. So I hope by today itself, everyone solve this program or solve this question using MATLAB. Okay? Done? Yes, sir. Done. फाइन. तो अब बाकी के जो है एग्जांपल उसका प्रैक्टिस आप लोग खुद करना. 6.5 वाला टॉपिक अभी हम लोग नहीं लेते हैं बिकॉज दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट स्पेस. स्टेट स्पेस भी हमारे इंटरनल एग्जाम में है. आई एम गोइंग टू कवर सून दिस स्टेट स्पेस. ठीक है, तो वो मैं बाद में कवर अप करूंगा. ओके, सो 6.5 दैट वी आर एट प्रेजेंट वी आर नॉट टेकिंग. So by this we end with the chapter number 6. 6.5 अभी लेना नहीं है. ये केस स्टडीज आप लोग खुद रिफर करना. दिस इज समरी, दीज आर द रिव्यू क्वेश्चंस एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स. ओके, तो ये अनसॉल्व प्रॉब्लम में से आपको प्रैक्टिस करनी है. फाइन. Steady state error already I covered this part, that is 7th chapter is already completed. Okay, अब we are moving towards the 8th chapter, root locus techniques. तो next class में हम लोग पढ़ेंगे root locus techniques. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Okay, Yes, sir. Okay. fine. Now one thing that I want to ask you. Hello, everyone are here? Yes, Yes, sir. sir. Yes. So if possible on your camera.